Hello students. So now we have reached to the next video of our chapter manufacturing industries, and we are going to cover the topic that is agro-based industries. In the previous video we had covered the different classification of industries on various bases, and now we are covering further the agro-based industries. That means we will cover the manufacturing industries on the basis of their raw materials. So they are agro-based and mineral-based industries. So first agro-based industries, और इस agro-based industries में हम कौन सी इंडस्ट्री को सबसे पहले फोकस करेंगे, which is considered the most important industry as far as the share in the textile industry are concerned. Most important industry I am talking about agro-based industries only, not the mineral-based industry. So on the basis of agriculture, we consider the textile industries the most important one. अब हम इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को करेंगे और इसके सिर्फ दो सेगमेंट को लेंगे आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग. वन इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. So now first of all the importance of textile industry. So textile industry includes this cotton, this jute, this silk, woolen. These industries are included under the textile industries. So when we talk about textile industries, always keep in mind we are not only talking about the cotton textile, we are also including the jute or the silk production or the woolen production. So first of all, the first paragraph given to you related to this topic is the importance of textile industry. How these textile industries are important for India or Indian manufacturing sector. So these points have been given to you in the form of a paragraph. The first importance they are telling you about the contribution of textile industry in the industrial production, and that contribution has been given to you here. That is 14%. It simply means out of the total industrial productions which is done by the manufacturing industries of India, out of the total industrial production, 14% of the industrial production is coming from textile industry. So in India or in any country, thousands of industries are there. They are producing various kinds of items, and out of all these thousands of items which are produced by the factory, 14% of the production is coming from the textile industry. So point number one. Second one is the most important point related to this industry, that is provide employment, generate employment. Now you can understand how much employment is being generated by this textile industry. That is 35 million people. 35 million people, that simply means 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री में इसके अलग अलग सेगमेंट्स में काम करते हैं. तो 3.5 करोड़ को अगर आप वैसे भी समझे कि एक आदमी अगर काम कर रहा है और उसके पीछे 4 आदमी खाने वाले हैं, 4 आदमियों का परिवार है, तो इसका मतलब आप 14 करोड़ और 5 का लगा लें अगर एक एवरेज, तो आप लगभग 17-18 करोड़ की आबादी की बात कर रहे हैं. तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की दैट इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो दिस इज द पॉइंट, एंड सेकेंड लाइन हैज बीन सपोर्टिंग द फर्स्ट वन, दैट इज टेलिंग यू दैट this industry, this textile industry is the second largest job providing industry after this agriculture. So after agriculture, the textile industry is giving jobs, and it is the second largest job providing sector, or not the sector, second largest job providing activity after agriculture. Now third one, which is very important, that is earning foreign exchange. So textile industry is helpful for earning foreign exchange. How? By producing different kinds of textiles, and then when we export these textiles to another countries, then we get the foreign currency, that is dollar. तो किसी भी देश को चलाने के लिए स्मूथली फॉरेन करेंसी का होना बहुत जरूरी है. और ये कितना अर्न कर रही है उसका डाटा ये दिया आपको कि आप अगर 100 रुपए या $100 कमा रहे हैं तो उसका लगभग 1/4 $25 जो है वो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के गुड्स से आ रहा है जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं.
So this is the importance related to textile industry. Then fourth one is the contribution in the GDP. And what is the contribution? That is 4%. Again, I am giving you the simple layman example. That is, if our country is earning 100 rupees, the GDP of our country is 100 rupees, so then 4 rupees will be coming from this textile industry. तो हमारा देश जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी में करोड़ों लोग काम करते हैं, लाखों किस्म के काम करते हैं, उन थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज में से सिर्फ 4% का कंट्रीब्यूशन अकेला सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहा है. तो दैट इज अर्निंग 4% इन द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री. देन द लास्ट पॉइंट इज द कंप्लीटली सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री. अब हाउ इट इज सेल्फ रिलायंट? इट फर्स्ट थिंग, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, इट सिंपली मीन्स कि दिस इंडस्ट्री इज कंप्लीटली सेल्फ इंडिपेंडेंट. We do not need any help from any foreign company or country as far as the technology is concerned, as far as the raw material is concerned, or as far as the management or processing is concerned. Everything related to this industry is done in our country. So we have covered this particular topic. Now we are moving to the next topic. And India in the medieval time period was known for its best quality of cotton and best quality of cotton products. Not the cotton only, the textile products. और यही रीजन है कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि क्यों जो यूरोपियन कंपनीज थी, why they were coming to India, why they wanted to find out a trade route, a sea route to India, so that they could make the trade relationship with India, because of the heavy demand of the textile products which were produced in India due to its best quality. और फिर unfortunately when they saw the political disturbance in our country, they made our country their political colony. And after the East India Company made India the political colony, they started exploiting our all the resources. और उसी टाइम पे 18th सेंचुरी में एक फिनोमिना होता है विच वाज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन. और फैक्ट्रीज और मशीन से जब माल बनना शुरू होगा यूरोप में, तो ऑब्वियसली मशीन मेड गुड वुड ऑलवेज बी चीपर एज फार एज प्राइस इज कंसर्न. और उसके बाद उन्होंने वो मशीन मेड गुड को सब टेक्सटाइल आइटम्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू किया. आवर हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम producers or the handmade, our spinners or weavers could not compete with these machine made goods, or as a result our textile industries were completely destroyed by the Britishers. तो वो आपको मैंने एक हल्का सा बैकग्राउंड वैसे ही बताया ताकि आप समझ सको कि वो इंडिया जिसका एक पीक था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसका डाउनफॉल ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ. अब हम यहां पे आपको एक ये बताया है, एक डाटा दिया हुआ है कि पहली जो कॉटन मिल भारत में लगी, दैट वाज सेट अप इन 1854. वेयर इट वाज सेट अप? इट वाज सेट अप इन मुंबई. अब यहां पे आपको आगे कॉटन टेक्सटाइल के बारे में ये बताया हुआ है कि अगर हम देखें हमारी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं आज कहां पर ज्यादा फोकस्ड है, जहां कहां पे कंसंट्रेटेड है, वेयर इट इज कंसंट्रेटेड, where the cotton textile mills and factories they are concentrated. So they are concentrated in two states, one is Maharashtra and another one is Gujarat. तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, why most of the cotton mills are concentrated in Maharashtra and Gujarat, and sometime Maharashtra is replaced with Mumbai and Gujarat is replaced with Ahmedabad. तो क्या रीजन है, कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अधिकतर कॉटन मिल्स जो हैं वो यहां पे कंसंट्रेटेड है. अब भारत में एक और डाटा आपको दिया कि कितनी कॉटन मिल्स हैं लार्ज स्केल की, तो वो भी आपको दिया हुआ है. देयर आर 1946 कॉटन मिल्स. उसमें आपको बताया कि जो प्राइवेट ऑन कॉटन मिल्स हैं वो 80% हैं, और रेस्ट ऑफ द 20% दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. क्लियर? एक मैं आपको ये डाटा इसलिए बता रहा हूं ताकि 1 मार्क्स में आप इसको याद रख सकें. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कई बार रिपीट हुआ है कि व्हाई द मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स दे आर कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात और इन मुंबई एंड अहमदाबाद. तो आप याद करिए जो हमने पिछला एक टॉपिक किया था पिछले वीडियो में
कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो हमने किया था रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लेबर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो सारे फैक्टर्स हैं, वो किसी भी जगह की इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्री कहां लगेगी उस चीज को डिसाइड करते हैं। तो यहां पर भी वही फैक्टर्स आएंगे। तो सबसे पहले व्हाई दीज कॉटन मिल्स आर मेनली कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो द फर्स्ट रीजन is the raw material. So we already know that the raw material is for cotton textile industry is obviously cotton, and this Maharashtra and Gujarat region that is covered by the black soil, which is perfectly suitable for the production of cotton. So because of the regular supply of raw material cotton that is produced in Maharashtra and Gujarat, most of the cotton textile industries are concentrated in these two states. Clear? This is the first point. Then the second point is the climate. So the climate, for the better production of cotton, we need humid climate. So that climate is available there due to the nearness to sea, nearness to the Arabian Sea. The Gujarat and Maharashtra, they are the coastal states located on the Arabian Sea. As a result, humid climate is there, and due to this humidity, better production of cotton is there. And second thing, you have to also mention the humidity in the air, the moisture in the air also helps in keeping the cotton thread intact. इंटैक्ट पक्का रखना, जो कॉटन का जो थ्रेड बनता है वो इंटैक्ट रहता है ड्यू टू द ह्यूमिडिटी. सो दीज टू फैक्टर्स are helping the industrialists or encouraging the industrialists to set up their industries in Maharashtra and Gujarat. Then means of transport, these states of Maharashtra and Gujarat, they have well established network of roadways, railways, airways, waterways as well. So as a result, good means of transport also help in importing the raw material from the interior area and then exporting the finished goods in the mills or factories to the market. So means of transport, आप चाहें तो इसमें एक पॉइंट और अलग बना सकते हैं, that is the point related to port facility. So Ahmedabad, that can avail the port facilities from the nearby ports in Gujarat, and Mumbai, that has been mentioned here, that is already giving the largest port facilities to India. So whatever we produce in our cotton mills, that can be exported to another countries with the help of these ports also. And even if we want latest machinery, we can import them from another country. So this port facilities is giving extra advantage to the cotton mills. And this is also the reason these mills are concentrated in Maharashtra and Gujarat. So we have covered 3 points. Oh, I have already given this point separately, so you can mention it here. Not 3, means of transport. 4th one is the port facility. 5th one is the labor. So Mumbai and Ahmedabad, they attract a large number of labor, working force from the surrounding areas as well as from the interior part of India. That means from Haryana, from Uttar Pradesh, Bihar, Odisha. A large number of people, they move to Maharashtra and Gujarat or Ahmedabad and Mumbai to get the job opportunity. That is why the labor is available, and both kinds of labor, skilled as well as unskilled labor, that can be easily available to cotton mills. Capital, so these two cities, Ahmedabad and Mumbai, they are the big cities, metropolitan cities. Capital is easily available in the forms of banks, in the form of stock exchange, in the form of stock market, as well as cooperatives are there. So if industrialists want to expand their cotton mills, they need the money that they can easily arrange through these banks. So as a result, all these things stimulate the industrialists to set up more and more cotton mills and factories in Maharashtra and Gujarat. Now we are moving to the next topic, that is various challenges related to cotton textile industry. तो कौन कौन से challenges हैं हमारी cotton textile industry से जुड़े हुए हैं? तो आपको इससे पहले मैं एक ब्रीफ थोड़ा सा और जो बीच में मिस हो गया है या
वो मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखा है, वो ये आपको बताया कि हम स्पिनिंग की फील्ड में बहुत अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी का जो यार्न है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो थ्रेड है बेस्ट क्वालिटी का, आफ्टर द स्पिनिंग वी आर प्रोड्यूसिंग देम एंड दैट इज कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट। प्रॉब्लम कहां आ रही है, जब हम थ्रेड बना लेते हैं, हमने कॉटन, रॉ कॉटन लिया और एक प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद उस रॉ कॉटन से उसके सीड्स अलग करके हमने उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया, उनको हम मशीनरी के थ्रू करते हैं और बेस्ट क्वालिटी का स्पिनिंग फैसिलिटी होने की वजह से हम बेस्ट क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। तो उस यार्न तक तो हम सब बढ़िया करते हैं और हम वर्ल्ड क्वालिटी का प्रोड्यूस करते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट वीविंग प्रोसेस, वीविंग देन डिजाइनिंग फिनिशिंग, उस प्रोसेस में हम मार खा जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम यार्न तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस करते हैं बट वीविंग प्रोसेस इज डिसेंट्रलाइज्ड। Yarning or spinning process is concentrated in Maharashtra, Gujarat and one more state has been mentioned, that is Tamil Nadu. लेकिन वीविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज मींस कि वीविंग का काम छोटे छोटे गांवों में और अलग अलग रीजन्स में चलता है एंड इट इज बेस्ड ऑन हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, और हैंडलूम्स और पावरलूम से लोग अपने छोटे यूनिट्स बना के, जो हमारे पुराने कारीगर हैं वो उसी काम को करते हैं, तो वो लेटेस्ट टेक्निक अडॉप्ट नहीं कर पाते अपनी पुरानी टेक्निक्स की वजह से, वो बेस्ट क्वालिटी का यार्न जो है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू सेल और वी हैव टू एक्सपोर्ट अवर बेस्ट क्वालिटी ऑफ यार्न टू अनदर कंट्रीज, और एज अ रिजल्ट हम एवरेज क्वालिटी का कपड़ा बना पाते हैं। तो ड्यू टू दिस एवरेज क्वालिटी ऑफ क्लोथ वी कैन नॉट compete with the world market. So only few of the mills are there which are fully advanced in India, which which has installed the process from the spinning to the finished good in their industries. लेकिन अधिकतर जगह पे जो कंप्लीशन का काम है, वीविंग का, उसके बाद फुलिंग का, एक फैब्रिक बनाने का और उसमें डिजाइन करने का काम, वो छोटी छोटी यूनिट्स में होने की वजह से हमें अपना जो यार्न है वो एक्सपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्री को। दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आप रॉ मटेरियल बेचेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन अगर आप उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके फाइनल गुड्स को बेचेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो उसका सिंपल एग्जांपल, पोटैटो बेचोगे तो 2 रुपए किलो बिकेगा या 5 रुपए किलो बिकेगा, लेकिन अगर उसको लेस के चिप्स बना के बेचोगे या डायमंड के चिप्स बना के भेजोगे, आप सेल करोगे, तो उसकी वैल्यू अपने आप ही वो 500 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो यहां पर भी आपको ये समझाया हुआ है कि इंडिया जो है वो, अगर हम यार्न की बात करें, थ्रेड की बात करें, तो वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें हमारा शेयर है 25%, 25%, 1/4 इट हैज बीन गिवन इन योर बुक। लेकिन अगर हम गारमेंट्स की बात करें, जो फाइनल गुड्स है इन यार्न से बनने के बाद, जो जीन्स या शर्ट आप बना के बेचते हैं, उसमें हम अपना शेयर देखते हैं तो वो शेयर बहुत बहुत कम है, वो 4% के अराउंड है। तो कहां तो हम अपना रॉ मटेरियल 25% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कहां हम अपना फाइनल गुड दैट इज गारमेंट, उसमें हमारा शेयर इंडिया का ओनली 4% इज देयर। और एक और फर्दर एग्जाम्पल आपको समझाया हुआ है कि यार्न की वैल्यू जो है वो 80 रुपीज पर केजी होगी, लेकिन अगर उसको हम जीन्स में कन्वर्ट करके और केजी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 80-85 रुपीज पर केजी की बजाय एक जीन्स की वैल्यू जो है वो 800 और 850 रुपीज पर केजी होगी, यानी कीमत 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो दिस इज द चैलेंज रिलेटेड टू आवर इंडस्ट्री। अब आपको यहां पे मुझे वो चैलेंज इस टॉपिक को देखकर याद आया, ताकि आपको वो भी समझा दूं। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स अवर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेसिंग। कुछ कॉमन है, जो आप 2 और इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस देखेंगे, इनफैक्ट 3 और इंडस्ट्रीज के देखेंगे, तो उनमें कुछ पॉइंट्स कॉमन आएंगे, जैसे ओल्ड मशीनरी, दिस इज अ कॉमन पॉइंट, सीपी मींस कॉमन पॉइंट। तो ओल्ड मशीनरी, आपको जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एक चैलेंज मिलेगा कि वी इंडियन आर यूजिंग ओल्ड मशीनरीज, ओल्ड एंड ऑब्सोलीट मशीनरी which are 30 years old or 40 years old, and we have not upgraded them. As a result, with the help of your old machinery, you will produce less quality products. So this is a challenge. Then second one is this, 2 3 years old machine, 3 years old machine, 4 years old machine, 5 years old machine, 6 years old machine, 7 years old machine, 8 years old machine, 9 years old machine, 10 years old machine, 11 years old machine, 12 years old machine, 13 years old machine, 14 years old machine, 15 years old machine, 16 years old machine, 17 years old machine, 18 years old machine, 19 years old machine, 20 years old machine, 21 years old machine, 22 years old machine, 23 years old machine, 24 years old machine, 25 years old machine, 26 years old machine, 27 years old machine, 28 years old machine, 29 years old machine, 30 years old machine, 31 years old machine, 32 years old machine, 33 years old machine, 34 years old m
irregular and expensive power supply, this is the second point, और ये भी common point आएगा जो भी आप challenge जिस भी industry में करेंगे. So power is supplied to our industries that is very expensive as compared to other countries, other developed countries. Per unit they are very expensive, and that is erratic supply or irregular power supply. So power cuts are there, तो because of this the production is delayed और फिर आप compete नहीं कर पाते. तो this is second problem. Third one, this is also common point, that is delay in the transportation. तो we know about the traffic jams. ठीक है, हमें पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स है, हमारी ट्रेन्स कितनी डिले करती हैं, वो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो या वो फ्रेट को ले जाने वाली ट्रेन हो. रोड्स में हमें कितना ट्रैफिक जैम जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है. सो ड्यू टू द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन इजीली फाइंड द डिले इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द फिनिश गुड्स. दिस इज द अनदर प्रॉब्लम. देन फोर्थ वन, यू कैन इवन टेक इट एज अ कॉमन पॉइंट, लो आउटपुट ऑफ लेबर. Low output of labor. So we have unskilled kind of labor. So our human resource is not as good as the human resource of Japan and or the human resource of UK or USA. So per labor the production output is very low. So when the productivity will be low, so we would not be able to compete. Simply to understand it, you just think about, suppose a labor working in Japanese factory that is producing that person is producing 50 shirts in a day, and our labor is producing 30 shirts a day. तो वो जो 20 shirts का लैक आ गया या पैंट्स का या जीन्स का लैक आ गया, तो वो उसके कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा और हम कंपीट नहीं कर पाएंगे. दिस इज द फोर्थ प्रॉब्लम, लो आउटपुट ऑफ लेबर. ये भी कॉमन है, ये भी सब में चल जाएगा. अब जो एक या दो पॉइंट ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक होंगे, जैसे एक ये स्पेसिफिक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट नंबर 5, stiff competition from the synthetic fibers. So there are many synthetic fibers, machine made fibers, which as compared to the cotton textile, they you can find it out कि cotton में आपको कई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कलर जाने का, श्रिंक होने का, फिर उसमें आयरनिंग प्रॉपर नहीं होती. जबकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो ज्यादा शाइनिंग होता है, उसको ज्यादा प्रेस की भी जरूरत नहीं पड़ती. तो इस सिंथेटिक फाइबर की वजह से देयर इज अ स्टिफ कंपटीशन फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, एंड वी आर फेलिंग इन दैट कंपटीशन, एंड दिस इज द अनदर चैलेंज. और एक पॉइंट में यहां पे स्पेसिफिक नंबर 6 आपके लिए बना रहा हूं, आप इसको ऐड कर सकते हैं. दिस इज योर पॉइंट नंबर 6, that is export of best quality yarn to another countries. तो मैंने अभी आपको बताया ना कि what we are doing, we are exporting our best quality yarn because our handloom industries, power loom industries or small power loom centers, cottage industries, they fail to use the best quality of yarn. So that is why we are exporting them to another country. So it is specific challenge, this one and this one. These two are the specific challenge, and rest are the general challenges which you can use in every industry's problems. If a question comes, explain the jute textile industries challenges or problems, so you can use these similar 4 points. Clear? So I hope you understood these two topics. Now we will cover the next topics in our next video. Thank you.